पहली बात यह है कि हम इसकी डेफिनेशन देखना चाह रहे हैं। ये मैंने जो है वो विजुअल इम्पेयरमेंट की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है। बेसिकली दिस इज विजुअल इम्पेयरमेंट ये शो करती है कि हमारे पास लॉस ऑफ साइट है और इसमें ब्लाइंडनेस भी है, और इसके अलावा अदरवाइज अगर कुछ हमारे पास दो चीज़ें बुनियादी तौर पर इसके अंदर इंक्लूड हो रही हैं, एक लॉस ऑफ साइट है और दूसरा ब्लाइंडनेस इंक्लूडेड है। अच्छा, डिफरेंट हमारे पास जिस तरह से बाकी डिसेबिलिटीज़ के डिफरेंट लेवल्स हैं, जहाँ पर भी हमारे पास उस तरह से तो स्पेसिफिकली हम इसको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड के अंदर तो शायद हम इसे नहीं कर सकते, बट हमारे पास इसको सिंपली हम लो विजन या फिर हमारे पास हार्ड ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट हम उसको कह सकते हैं, या फिर इसके लिए थोड़े बहुत फ़र्क के साथ डिफरेंट जो है वो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं जो कि इसकी सीवियरिटी को डिफाइन करती हैं। तो बुनियादी तौर पर यह है कि ये हमारे पास लॉस ऑफ विजन है विच इज़ द एडवर्सली अफेक्ट द एजुकेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, जहाँ पर हमारे पास ये इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, सोशल इफ़ेक्ट्स हैं और इमोशनल इफ़ेक्ट्स हैं, और ये साथ ही साथ आपके इन चीज़ों के जहाँ पर इन चीज़ों के इफ़ेक्ट हैं वहाँ पर इसी तरह से ये उनकी फिर तमाम एरियाज़ की डेवलपमेंट को भी मुतासिर करती है, जैसे सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन डेवलपमेंट है, और जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं इन सब के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली जो वो ह्यूमन परफॉर्मेंस को, जो आप ये कह सकते हैं कि बच्चों की परफॉर्मेंस को, चाइल्ड परफॉर्मेंस को, उस इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को जिसको विजुअल इम्पेयरमेंट का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए मसाइल पैदा करती है। हाँ, हम कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि हमें इस बात से इन एडवर्स इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए जो है वो हमारे पास जो है वो साबित हो सकती है। एज आई हैव ऑलरेडी गिवन एग्जांपल रिगार्डिंग सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट इन अ लोकल प्ले ग्रुप, अ चाइल्ड विद विजुअल इम्पेयरमेंट हु इज़ अनएबल टू सी व्हाट अदर चिल्ड्रन आर डूइंग मे नॉट बी इनवाइटेड टू जॉइन इन। मतलब कि उसके लिए जो है वो उन चीज़ों को जो हमारे पास टिपिकल चिल्ड्रन हैं, जो नॉर्मल चिल्ड्रन जो कर रहे हैं, उसको जो बच्चे वो कर रहे हैं उसको वो नज़र नहीं आ रहा जो विजुअल इम्पेयरमेंट का शिकार है, तो इसलिए उसको इनवाइट नहीं करेंगे। तो दिस थिंग इज़ बैडली एंड एडवर्सली इफेक्ट द सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, जहाँ पर उस बच्चे की सोशल डेवलपमेंट जो है और इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी, बल्कि वो इसको बहुत ज़्यादा फील करेगा और उसको ये कह लें कि एहसास कमतरी का शिकार भी होगा। My dear students, also the development of the preschool child with visual impairment is discussed by the different researchers who raises the issue to do with emotional and social development, motor development, language development, and the growth of independent skills, possible behavior difficulties, and other matters. Dear students, before a child with visual impairment starts primary school, the teacher for the visual impaired children usually provide the school with details of the assessment of the child vision and the educational implications. A mobility officer or the teacher will help the child find his way around the new school. Careful consideration will be given to the classroom environment so that
Such factors as the illumination, the use of the tactile displays with braille labeling, and the print resources being used all enable the pupils' learning. And during adolescence, there are implications relating to visual impairment and physical, cognitive, social, and emotional developments. For example, regarding the physical and sexual changes of adolescence, a fully sighted person can see these developments and compare them to similar changes experienced by peers. But an adolescent with visual impairment cannot see these changes and has to rely mainly on verbal descriptions. While touching taboos constrain the opportunity to explore bodily changes in others. Challenges are also arise in the transition to adulthood, in further and higher education, and in preparing for and the following a career. तो इन बच्चों को ट्रांजिशन के प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। लाइफ के डिफरेंट फेजेस से गुजरते हुए भी इन्हें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इन्हें अपनी जॉब के लिए जो है वो उसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो जो ट्रांजिशन प्रोसेस है, ट्रांजिशन का टोटल इनका जो पीरियड है उसमें इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इनके लिए बहुत ज़्यादा सम टाइम डिफ़िकल्ट भी होता है। चूँकि हमारे यहाँ उस तरह से जिस तरह से बैरूनी दुनिया के अंदर एडवांस कंट्रीज़ के अंदर रिसोर्सेज हैं, शायद हमारे पास उस तरह से रिसोर्सेज नहीं हैं। अब हम बात करना चाहते हैं कि प्रेवलेंस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। प्रेवलेंस का सिंपल मतलब ये है कि भाई आपके पास पॉपुलेशन की क्या परसेंटेज जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो जहां पर मैं आपसे कुछ स्टैटिस्टिक्स जो है वो शेयर कर रहा हूं। SEN से मुराद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स refers to the number of children with a particular type of SEN in a specified population over a specified period. For example, 0 to 5 years. 0 to 5 years एक्चुअली जो परसेंटेज के अंदर होता है कि व्हाट इज द परसेंटेज, बेसिकली वो परसेंटेज हमें जो है वो पता होनी चाहिए कि वो परसेंटेज क्या है। तो उस परसेंटेज के अकॉर्डिंगली जो है वो हम उसको देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो हमारे पाकिस्तान की भी आपसे मैं जो है वो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स शेयर करूंगा, लेकिन जहां पर आप जो है वो इस वक्त हम डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ और अमेरिकन और दूसरे देखेंगे जो कि जहां पर ज़्यादा कैलकुलेशन कंपैरेटिवली बेटर है, वहां पर हमारे पास क्या है। There is one organization that is RNIB. This organization conducted a survey and reported in 2003 involving a sample of education services for people with visual impairment in LEAs. It was estimated that 20,870 children up to the age of 16 years in England experienced visual impairment. This report has been designed by the Kale and Colonies Ross 2003. This report indicated a prevalence rate of 2.5% या 2.5 per 10,000 children in England। यानी आप ये देख सकते हैं कि 10,000 में से 2.5 बच्चे उसने कहा है, चलें को अप्रोक्सीमेटली यू कैन से कि 3 बच्चे, हर 10,000 में से 3 बच्चे जो हैं वो इस चीज़ का शिकार है। एंड ऑफ दीज चिल्ड्रन 30% हैज़ एडिशनल कम्प्लेक्स नीड्स। वो हमारे पास कौन सी हैं, जैसे सीवियर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं और प्रोफाउंड एंड मल्टीपल लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं।
and only 1.4% of the children in the survey were deaf blind. 1.4% deaf and blind, deaf blind. The great majority of pupils with visual impairment who read and write use print, while about 4% of the children and young people aged 5 to 16 years use Braille as the main medium for learning. Regarding the visual impairment, in January 2004 in England, there were 2,970 people at school action plus, representing 0.8% of people at this part of the special educational needs framework, and a further 4,200 with the statement of special educational needs, are 1.8% of people with statements. The specific figure for ordinary and primary and secondary schools and for special schools are given as I am telling you in the next one. कि जो प्राइमरी स्कूल हैं that have the 1940 pupils with visual impairment were at school action plus. ये मैं आपको स्टैटिस्टिक्स जो है वो इंग्लैंड की बता रहा हूँ, जो कि आप कंपेयर कर सकते हैं अपने पाकिस्तान में. अप्रोक्सीमेटली दिस इज अ नेचुरल रेशियो. हमारे यहाँ थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा, अराउंड 4% कहा जाता है कि 4% हमारे पास जो है वो टोटल पॉपुलेशन जो है वो इसका शिकार है. एंड इन सेकेंडरी स्कूल्स द नंबर वाज 1020 at school action plus, 0.8% and 1630 with statements of special educational needs. यानी मतलब यह है कि जिन बच्चों को स्पेशल एजुकेशनल नीड्स का इशू है, जो कि स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, जो अदर प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, उनकी तादाद क्या है, दैट इज़ द 2.1%. In special schools where it is much less usual for people not to have statements of SEN. Statement of SEN से मुराद, बार बार जो लफ्ज़ मैं आप बोल रहा हूँ, इससे मुराद ये है कि जो बच्चे डिफरेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज एंड अदर डिसेबिलिटीज़ को फेस कर रहे हैं वो क्या है. There was only 10 pupils at the school action plus, 0.5%, and 990 with statement of the SEN, 1.1% belong to and have a prevalence in the schools. The figures for special schools included people attending maintained and non-maintained special schools, but excluded people in independent special schools and pupils in maintained hospital schools. My dear students, you have a listen about the prevalence of visual impairment. That is, I have made the different categories and with the different problems and share the prevalence with you. Let's come on for the causes and the types of visual impairment. My dear students, there are different causes and the factors which are responsible for the visual impairment. Those factors can be the genetic, that arises during the fetal development or during the birth process, or may sometime occur in the childhood age. Various conditions and syndromes, some of which are genetically determined, can be passed to the children by a parents or both parents who may be unaware that they carry the condition. हमारे यहाँ जो चीज़ें ज़रा ज़्यादा पाई जाती हैं, उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ हेल्थ अवेयरनेस नहीं है. अगर गांव देहात की बात करें तो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि ज़िंदगी भर अपना जो है वो चेकअप नहीं करवाते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता कि हमारी वजह से बच्चों के अंदर जो चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएंगी या ट्रांसफ़र हो रही हैं, या उनको इन चीज़ों का इलाज करवाना चाहिए. ऐसी बहुत सारी, बल्कि मदर्स भी केयरलेस हैं और उनको भी बिल्कुल, मेल्स का तो फिर भी कुछ कंपैरेटिवली लोग मूव करते हैं अब शहरों की तरफ, लेकिन
जो फीमेल्स हैं वो बिल्कुल ही अनअवेयर होती हैं चीज़ों के साथ, और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जेनेटिकली इन बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे ज़िंदगी के अंदर एडवांसमेंट आ रही है, इसी तरह बीमारियां भी जो है वो बढ़ रही हैं, उनके अंदर भी डिफरेंट किस्म की जो है वो मतलब कि वैरायटी तो नहीं कहना चाहिए, बट ये कहना चाहिए कि मल्टीपल हमारे पास जो है वो इश्यूज़ के अंदर हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, जिनको अवेयर रहने की ज़रूरत होती है, लेकिन चूँकि पेरेंट्स उससे अवेयर नहीं होते, जिनकी वजह से जेनेटिकली बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन बच्चों की विजुअल इम्पेयरमेंट का बायस बनती हैं। और द अवेलेबल ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग enables parents carrying such conditions to plan for children with this information available to them। हमारे यहाँ जो जेनेटिक काउंसलिंग हमारे यहाँ मौजूद है, अभी पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जब ये लिमिटेड है, इसकी सर्विसेज बहुत महंगी हैं, तो ये जेनेटिक सर्विसेज हमारे यहाँ इस तरह से अवेलेबल नहीं है। बाकी दुनिया के अंदर बहुत अच्छी अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह से अवेलेबल नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान में इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छा जो है वो काम स्टार्ट हो रहा है, और इनके जो बच्चों के जो डिफरेंट इसके उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ड्यूरिंग बर्थ बच्चों को जो है वो फेस करना पड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैटरनल रूबेला कैन लीड टू बेबी हैविंग विजुअल इम्पेयरमेंट सेट एज cataracts where the lens of the eye is cloudy or opalescent, resulting in a loss of vision for detail। उसके बाद हमारे पास है माइक्रोफेल्थीमिया, अंडर डेवलप्ड आइज, जिसमें हमारे पास जो है वो बच्चों की आइज़ जो है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पाती हैं। बहरहाल आजकल ये फैसिलिटी अल्ट्रासाउंड ने दे दी है कि बच्चों के डिफरेंट पोर्शंस जो है वो बॉडी के जब डेवलप नहीं होते हैं तो उसके लिए भी जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। बहरहाल ये है कि जब भी हमारे पास प्री मैच्योर बेबी का होना, और बहुत सारे ये प्री मैच्योर बेबी का होना नहीं है, बल्कि यूँ हम कह सकते हैं कि सम टाइम जो है वो बेबी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पाते। उसकी कुछ भी रीज़न हो सकती है, मदर की हेल्थ हो सकती है, या फिर कुछ और जेनेटिकली रीजंस हो सकती हैं। तो दिस इज़ अंडर डेवलप आइज़ हैं। अंडर डेवलप आइज़ जब भी हों तो इसका मतलब ये कि फुली डेवलप नहीं हो पाएँ, तो उसी तरह से जो है वो उसकी चीज़ें और उसकी वीकनेस और बाकी चीज़ों का जो है वो जब अंडर डेवलप होंगी तो ऑटोमेटिकली वो फुली जो है वो फंक्शनल नहीं होंगी, और उसमें बहुत सारे मसाइल होंगे। और सम टाइम प्री मैच्योर बेबी का होना भी जो है वो जिसमें लेस दैन 1300 ग्राम्स और हाई क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन जबकि रिक्वायर होती है, अगर वो नहीं मिल पाती तो तब भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, जिसमें बेसिकली ब्रेन को बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल होते हैं। तो ब्रेन जो आंखें हैं, यकीनन हर चीज़ का ताल्लुक वैसे ब्रेन के साथ ही है, बट दिस इज़ मोर क्लोज टू ब्रेन, और इसमें जो है वो ऑक्सीजन ना होने की वजह से समटाइम बहुत सारी नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जब इमीडिएटली बच्चों को जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं मिलती नहीं है जो कि रिक्वायर्ड होती है। तो इस वजह से भी बहुत सारे मसाइल आते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो कि विजुअल पाथवे जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, कॉर्टिकल और विजुअल इम्पेयरमेंट का शिकार हो जाते हैं। और विजुअल लॉस समटाइम मे बी समटाइम मतलब कि परमानेंट एंड maybe sometimes the temporary, caused by disturbance of the posterior visual path and or occipital lobes, उनकी वजह से भी हमारे पास जो है वो हो सकते हैं। बेसिकली जो हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो इसके लिए जी वो भी इसका एक इशू बनता है, जिसकी वजह से मसाइल आते हैं। उसके वजह अलावा जो जैसे मैंने ब्रेन के हवाले से पहले बात किया कि आपके ब्रेन का जो डैमेज होना है वो भी उसके लिए जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ का बायस बनता है, जिसकी वजह से जो आफ्टर बर्थ भी हमारे पास जो है वो कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोई इंजरी हो सकती है, कोई डिजीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से आई साइट जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। माय डियर स्टूडेंट, अमंग टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट are refractive error, myopia or short-sightedness, hypermetropia और long-sightedness जिसे कहते हैं, and
एस्टिग्मेटिज्म है और अदर टाइप्स हैं, जैसे ये का कैटरेक्ट है और रेटिनस है और पिगमेंटोसा है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं विजुअल इम्पेयरमेंट की। मतलब कि जैसे हम शॉर्ट साइटेडनेस है, लॉन्ग साइटेडनेस है, और इसी तरह से ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट हमारे पास इश्यूज हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के। जिसमें जो पहले हमारे पास जिनका मैंने जिक्र किया है कि मायोपिया है, जिसे हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, या फिर हाइपोमेट्रोपिया है जैसे लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, या एस्टिग्मेटिज्म है। ये जो हमारे पास तीन चीज़ें हैं, इनको हम रिफ्रैक्टिव एरर्स का नाम देते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर्स, जिनमें रिफ्रैक्शन का इशू होता है, लेंस का इशू होता है। और जो दूसरी हमारे पास टाइप है, उनको मैं दोबारा से आपके लिए बोल देता हूँ। ये कैटरेक्ट है, नेस्टेगमस है और रेटिनस है और पिगमेंटोसा है। ठीक है, ये हमारे पास जो चीज़ें हैं। The refractive errors are often straightforward and corrected by spectacles or contact lenses worn for specified purposes. A child is considered to have visual impairment only if the best correction vision is significantly outside the normal range for near and distance visual acuity. And in myopia or short-sightedness, the eyeball is too long, so that the parallel light rays coming from a distance do not focus on the retina at the point where they should actually. Instead, the light rays are focused between the lens and the macula, so distance vision is blurred. Corrective concave spectacles or contact lenses are used. And hypermetropia or long-sightedness is a condition in which the eyeball is too short and light rays focus behind the retina so that the vision is blurred or in extreme cases not effective. In straightforward instances, convex lens spectacles or contact lenses can correct hypermetropia so that the light rays are focused on the fovea. However, other conditions also occur, such as cataracts. Visual acuity is reduced even when prescribed spectacles are worn. For example, children with hypermetropia, long period of time spent on the close tasks such as reading should be avoided because they cause discomfort. प्रॉब्लम आती है, सर दर्द शुरू हो जाता है, जब आपके और मसाइल शुरू हो जाते हैं। लो विजन डिवाइसेस सच एज अ क्लोज सर्किट टेलीविजन में बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर सम पीपल्स। And is similarly in astigmatism, the main cause is the lens or the cornea of the eye has irregularities in its curvature that lead to its refractive power behind being variable, causing the image on the macula to be distorted. A cylindrical correction built into the lens of spectacles can rectify this, but where astigmatism is accompanied by myopia or hypermetropia, correcting vision can result in a visual activity being reduced. Let's come on and the next slide please. Identification and assessment. My dear students, आइडेंटिफिकेशन आपने कैसे करनी है? Most severe visual impairments problems are identified within the first few months of the baby life, perhaps by the maternity hospital, health visitor or the parents. Some difficulties may be appreciated until the child starts school. हमारे पास चूँकि छोटे बच्चों में ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी बच्चों की जो है वो आई मूवमेंट के ज़रिए और बाकी चीज़ों के ज़रिए मदर को जो है वो उसका आइडिया हो जाता है। अगर मदर को आइडिया ना भी हो तो उसके लिए अगर हम उसकी डिफरेंट जो है वो हरकत और सकरात से भी हम बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं।
बट फॉर्मली जो इन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन है ऑटोमेटिकली वो एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। और लेकिन बहरहाल ये चीज़ें जब थोड़ा सा बच्चे को जो है वो समझ आती है, थोड़ा सा वो एज स्कूल गोइंग होता है, तो यकीनन बहुत सारी डिफ़िकल्टीज, अगर मतलब कि उसको नज़र आ रहा है लो विजन है या कुछ इस तरह की चीज़ें, फिर वो स्कूल के जाने पर है, जब वो पढ़ना स्टार्ट करता है, जब वो चीज़ों को देखना स्टार्ट करता है, तब ज़्यादा सामने आती है। और असेसमेंट क्या है कि असेसमेंट ऑफ विजन एंड एट एजुकेशनल असेसमेंट ऑल्दो ऑफ कोर्स ऑफ द टू आर रिलेटेड। पहले हमने ये देखना है कि हम जो है वो उसकी असेसमेंट कैसे करेंगे, कैसे चीज़ें जो है वो चलेंगी, कि उसके विजन की जो असेसमेंट है वो कैसे हमारे पास पॉसिबल है। My dear students, when a child is very young or unable to cooperate verbally, methods can be used to gain information about vision, such as testing, blinking reflex, or measuring the electrical responses of the visual cortex. A full assessment of vision would be expected to include the following. ये मेसन ने हमें 6 पॉइंट्स दिए हैं कि इसके ज़रिए आप जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। एक है डिस्टेंस विजन टेस्ट है, नियर विजन टेस्ट है, फील्ड ऑफ विजन टेस्ट है, टेस्ट ऑफ कलर्ड परसेप्शन है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी टेस्ट है, और असेसमेंट ऑफ विजुअल फंक्शनिंग है। तो ये हमारे पास बेसिकली 6 डिफरेंट वेज हैं जिनके ज़रिए हम जो है वो बच्चों की विजन को जो है वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फॉर टेस्ट 1 to 3, यानी a distance vision test, near vision test and field of vision test, each eye is normally tested independently, then both eyes are tested together. Distance vision and near vision are usually tested with and without aids such as spectacles that the child might use. Example of each type of test 1 to 6 will be considered. And the distance vision is commonly tested using the Snellen test charts, comprising letters, number of pictures arranged in a rows of descending smallness. My dear students, मैं आपको सिर्फ जो एक शॉर्टली इसका ज़रा बता देता हूँ, हम इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ प्योरली क्लिनिकल प्रोसीजर कि उसके अंदर हम जो है वो क्या किया जाता है, जहाँ पर हम जो है वो लेटर्स और डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को जो है वो सामने रखते हैं। इसमें मतलब कि शॉर्ट साइटेडनेस के लिए और लॉन्ग साइटेडनेस के लिए, और इन चीज़ों को देखने के लिए हम एक डिस्टेंस का तयन करके उसके अकॉर्डिंगली हम उनको चेक कर लेते हैं। जैसे आपने कभी आप आई डॉक्टर के पास गए हों तो उसने भी जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को जो है वो आपके सामने रखा होता है और आपको उसके अकॉर्डिंगली वो मेजर करता है आपकी कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, visual functioning concern how well a child makes use of vision in day-to-day activities. When two children have the same visual acuity and may differ in the visual functioning, for example, one child may be more willing to use the vision he has and benefit from better mobility and orientation skills than the other. A qualified teacher of the visually impaired normally makes an assessment of visual functioning, which involves consulting the child and others who know him. The assessment investigates the strengths and weaknesses in the way that the child uses vision, take into account the cognitive and the social development. अब हमने देखना है कि माय डियर स्टूडेंट्स के हमारे पास जो है वो एजुकेशनल असेसमेंट उसके लिए जो है वो कैसे की जा सकती है। एजुकेशनल असेसमेंट के लिए हमारे पास ये है कि बुनियादी तौर पर डिफरेंट हमारे पास असेसमेंट के डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हमारे पास बनाई गई हैं। इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि लुक एंड थिंक चेकलिस्ट है, दैट इज़ क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट है।
that enabling the teacher to assess a sample of perceptual and cognitive skills of the children age 5 to 11 years. इसके अंदर 18 सब स्केल्स हैं और उसमें डिस्क्रिमिनेशन अमंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स and color differentiation abilities. It aims to help the teacher find out what the child can do in the classroom, so the teacher can devise tasks that will encourage skills such as scanning, discriminating and matching. मैं आपसे एक और स्केल भी शेयर करता हूं जिसका नाम है द ब्रिटिश एबिलिटी स्केल। ये इलियट 2005 है और इसके 23 सब स्केल्स हैं, some of which are considered suitable to use with the child who are blind and have low vision. For example, similarities, word definitions and recall of digits, subtests which are presented orally and require an oral response. A tactile version of the speed of the information subtest has been developed and standardized on a blind population. एक और टेस्ट भी है जिसको जो है वो दी नील एनालिसिस ऑफ रीडिंग एबिलिटी के नाम से जो है वो कहा जाता है। असेस रीडिंग स्पीड, एक्यूरेसी एंड कंप्रीहेंशन while parallel forms allow for retesting. It has been standardized for use with blind children. और लास्टली हमारे पास एक विजन ऑफ डूइंग के नाम से है, जो एथकिन और 1992 में उन्होंने डेवलप किया था, that aim to assess the functional vision of the children with visual impairment and multiple disabilities. It provides an assessment and also indicates how children can be assisted to develop and use functional vision for increasing their understanding of aspects of their physical and social surroundings such as objects and the events. My dear student, this is all for the day. I hope you have got enough information regarding the visual impairment causes and the different tests for their visual impairment and for the educational assessment what they can do, the children with the visual impairment and the low vision and the deaf blind. In case of any query and problem, you can ask me on the ISP portal. Regards. Thank you very much. Allah Hafiz.